Last class we started our lesson 16, that is Revolt of 1857. We studied that our country was called once the Golden Bird because it had a lot of riches, mineral wealth and spices. It had a lot of riches, mineral wealth and spices which attracted traders. So our country had lots of minerals, spices, because of which the foreign traders used to come to India for trading, means for business. Among them there were Portuguese, Dutch and various other European countries. So at last we studied that they had a fight among themselves that who will be the biggest trader here in India, and among them British defeated the others and emerged as winners. Along with the trade, the British soon started taking interest in the political functioning of the country. They wanted to take cheap raw goods from India and use them in their industries in England. So the Britishers came as traders, but they started taking interest in political functioning of the country. वो आए तो थे बिजनेस करने, बट धीरे धीरे वो वहाँ पर राज करने की सोचने लगे. दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. एंड वन मोर थिंग व्हाट दे डिड, they took raw goods, means raw materials they started taking for their industries in England. इंडिया से बहुत ही सस्ते दामों में रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और उन्हें ले जाकर इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में बनाते थे और फिर उसे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही हाई कॉस्ट में सेल करते थे. To make goods which were then sold all over the world for profit. In 1600, the British formed the East India Company with the purpose of trading with India. और 1600 तक उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना डाली जिसके थ्रू वो इंडिया से ट्रेड करते थे, यानी इंडिया से बिजनेस करते थे. Establishment of British Raj. The British were in great need of raw materials for their factories in England. Along with the raw materials, they now also needed a market to sell their finished goods. Soon the British were not satisfied by being mere traders in India. They wanted to take control over the entire country and control its wealth. Around the same time, the Mughal Empire in India was on the verge of declining. During that time, India was divided into many small kingdoms. The rulers of these kingdoms were always fighting amongst themselves. The British took advantage of the situation and started spreading their hold over the country. They held one king against the other and were able to gain control over the wealth and power of these kingdoms. So first thing, इस वक्त ब्रिटिश को क्या ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों में ख़रीदना और अपने फैक्ट्रीज़ में इंग्लैंड में ले जाना, वहाँ गुड्स तैयार करके उसे पूरे वर्ल्ड में महंगे दामों में बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत थी. सेकंड थिंग, वो इंडिया में सिर्फ ट्रेडर्स बन के नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे इंडिया पे कंट्रोल करना, अपनी राज चलाना इंडिया पे. सो एंड व्हाट हैपेंड, उस वक्त जो इंडिया में मुग़ल एम्पायर था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे पहले, वो भी बहुत वीक हो गए थे और बाकी इंडिया जो था वो भी काफ़ी छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था और जो हर छोटे छोटे किंगडम के रूलर्स आपस में फ़ाइट कर रहे थे और इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्होंने अपना होल्ड बनाना स्टार्ट किया कंट्री पे. वो एक एक किंग को आपस में लड़वा देते थे और उनके सारे वेल्थ और सारे किंगडम्स का पावर अपने हैंड में ले लेते थे. Rising restlessness among the Indians. Many Indians were unhappy with the British Raj. They were not
given high posts in the British administration. The officers of the East India Company started using unfair means to gather wealth. The Indian merchants, traders, farmers, and peasants lost their income as they were forced to grow crops such as indigo, cotton, which the British used as raw materials in their factories. They could not grow enough food for the country. These raw materials were purchased by the British at very low prices. So the Indians were not happy with the British Raj. Why they were not happy? Because East India Company, the company which was made for the business in India, they started using unfair means to gather wealth. Means वो cheating करना start कर दिया उन लोगों ने. What kind of cheating? That they to force the Indian farmers to grow the crops like indigo and cotton, because they needed indigo and cotton for their factories in Britain, where they used to make clothes. For making those they needed इंडिगो एंड कॉटन. तो फार्मर्स को फोर्स करते थे अपने फील्ड्स पे यही ग्रो करने के लिए, जिस वजह से फार्मर्स फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते थे और फिर वो इंडिगो और कॉटन को बहुत ही कम प्राइस में खरीदते थे. सो फॉर दैट द पीजेंट्स एंड फार्मर्स वर नॉट हैप्पी एट ऑल. The Indian handloom industry also suffered as the finished goods made by the British were of better quality and cheaper as compared to the cloth made by local weavers. As more and more people started buying British cloth, the Indian handloom industry started disappearing. One more first problem was of peasants and one more problem was that India में जो handloom industries थे, हैंडमेड क्लोथ्स, वो महंगे होते थे और थोड़े रफ. मीन्स द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स मेड बाय द ब्रिटिश वर बेटर देन द क्लोथ्स मेड बाय हैंड इन इंडिया. सो पीपल स्टार्टेड बाइंग द ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटेन में बने हुए कपड़े खरीदने लगे लोग, जिस वजह से जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो सफ़र करने, बिकॉज the cloth made in the British factories were cheaper. एक तो वो सस्ते थे और उनकी क्वालिटी अच्छी थी. बट इसकी वजह से हमारे कंट्री के जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा. Soon the British started feeling superior to the Indians. They treated Indians badly and did not let them enjoy any of the privileges that they enjoyed. All this gave birth to restlessness and anger amongst the people. People now forgot their fears and stood together as citizens of one nation. They together rose in revolt against the British. और इस वक्त तक ब्रिटिश इंडिया में अपने आप को इंडियन से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा सुपीरियर मानने लगे थे और ये बात इंडियंस को अच्छी नहीं लगी. वो परेशान थे, वो गुस्से में थे. एंड दे ऑल स्टूड टुगेदर एज सिटीजन्स ऑफ वन नेशन. सब मिल कर के सब ने एकता दिखाई और सब ने डिसाइड किया कि अब हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहिए, इन्हें अपनी कंट्री से भगाना चाहिए. Now here we have some quick practice questions. These answers I will send you. And complete your work the same day you get the work.